dear friends, we will go into the same way about the derivation of the first order, but this time we are going to consider the gas phase reactions. Okay, so see how it is going to be. Let us have A, which is in the, of course, in the gaseous state, and it is going to give you B in the gaseous state as well as the C in the gaseous state. Okay, now let the pressure of A at T is equal to 0 be given as Pi, which decreases by X at the time T. Okay, which decreases by what? X at time T. So that means at time T, the pressure of A will be equal to nothing but Pi minus of X. बराबर है? वापस से बोलता हूँ, इनिशियल प्रेशर क्या है? Pi. वो डिक्रीज होगा किससे? बाय X से. तो एट टाइम व्हाट? T. तो एट टाइम T प्रेशर कितना होगा फिर A का? Pi माइनस ऑफ X. पहले इनिशियल प्रेशर था, फिर प्रेशर कम हो गया. ओके भाई, पहले समझो 20 बार्स है, फिर 5 बार्स हो गया, तो कितना बचेगा फिर? 15 बार्स. सो दैट इज व्हाट इट इज. दिस इज द इनिशियल प्रेशर. इतने से कम हो गया, तो अभी कितना प्रेशर रहेगा A का एट दैट पर्टिकुलर टाइम T, एंड दैट इज Pi माइनस ऑफ X. ओके, प्रेशर ऑफ B, ये जो X से जो प्रेशर कम हुआ है किसका? रिएक्टेंट का, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं दूसरी नजरिए से? उतना प्रेशर किसमें कन्वर्ट हो गया? जी हाँ, प्रोडक्ट्स में. अगर रिएक्टेंट का प्रेशर कम हो रहा है तो प्रोडक्ट का प्रेशर बढ़ेगा. सो दैट मींस Pb इक्वल टू Pc, द नंबर ऑफ मोल्स आर द सेम, सो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट? X. ओके, जितना प्रेशर कम हुआ है वो उतना उसका प्रेशर है. किसका? प्रोडक्ट्स का प्रेशर है. तो देयरफॉर द टोटल प्रेशर की अगर बात करें, टोटल प्रेशर P will be equal to Pa plus Pb plus Pc, so that is equal to Pi minus of X plus X plus X, so that is equal to Pi plus X. So P is equal to Pi plus X, so therefore X will be equal to P minus of Pi. Okay, ये मिल जाएगा हमें. P is equal to Pi plus X, so X will be equal to P minus of Pi. अभी ये इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं in this particular equation. So this is 1 and this is 2. So substitute 2 in 1. So we have Pa will be equal to Pi minus of X का वैल्यू कितना है? P minus of Pi. So that is equal to Pi minus of P, minus and minus becomes plus Pi. So that is equal to nothing but 2 Pi minus P. ये क्या होगा? प्रेशर ऑफ A. अभी वो फार्मूला में जाते हैं हम लोग. K is equal to 2.303 upon T into log of A0 upon AT. Okay, now that is nothing but equal to, हम क्या बोलेंगे अभी? 2.303 upon T into log of A0. A0 मतलब इनिशियल प्रेशर, that is Pi, divided by AT. मतलब we now going to talk about what? AT मतलब क्या? It is, this was concentration at time T. Now we go on pressure at time T, that is PA. और PA का फॉर्मूला क्या मिला मुझे? 2Pi minus of P, where P is equal to total pressure. Okay, समझ में आई आप लोग को? This is what the equation which we are getting for which purpose? For a gas phase reaction. This is the one we are getting. Okay, so once again I can give you a recap. Gas phase reaction है जहाँ पर the reactants and the products are going to be in the gaseous state. It's a first order reaction. So I'm going to consider the reactant, that is A. It is getting converted into B as well as C. So the initial pressure is given as Pi. Initial pressure का मतलब जब time 0 है. अब जैसे जैसे रिएक्शन शुरू हो गया, ओके, एंड वी कंसीडर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल से T, तो X से प्रेशर कम हो रहा है, तो एट टाइम T द प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट A विल बी Pi minus X. ओके, और जो कम हुआ X से कम हुआ, तो दैट मींस दैट इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट्स, यानी प्रेशर ऑफ B एंड प्रेशर ऑफ C इज इक्वल टू X. ओके, तो अभी टोटल प्रेशर कंसीडर करेंगे, तो टोटल प्रेशर कंसीडर करेंगे तो सबका प्रेशर ऐड कर देंगे, तो इस तरीके से मुझे मिलेगा टोटल प्रेशर इज इक्वल टू Pi प्लस X, यानी X इज इक्वल टू P माइनस Pi.
तो वो फिर इस सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वी गेट अ न्यू एक्सप्रेशन फॉर PA, दैट इज द प्रेशर, ओके, एट द पर्टिकुलर टाइम इंटरवल T, दैट इज 2PI माइनस P, एंड देयरफॉर फिर हम लोग फाइनल इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे A0 is nothing but the initial pressure, that is PI, AT will be the pressure at time T, and that is 2PI minus P, so that is what it is. So P is going to be the total pressure. Alright, I guess the concept is clear to you. We now discuss about what will be the units of the rate constant for the first order reaction. Now, the formula we once again go for K is equal to 2.303 upon T into log of A0 upon AT. Okay, units of K for the first order reaction. Okay, so now A0 and AT are concentration terms, so they will be out. 2.303 is a simple number, so that means the unit of K is nothing but time inverse. So it can be second inverse, it can be minute inverse, it can be hour inverse, it can be day inverse, okay, it can be week inverse, depends upon which unit the time is expressed. Okay, so when you consider a reaction, उस reaction में जिस unit में time को express किया गया है, okay, उसका inverse कर दीजिए, so that is going to be the unit of the rate constant. Okay, and that is what it is. I guess आपको ये simple सा concept तुरंत ही दिमाग में गया होगा.